Hello to your children. Today we will do lesson number 9, Mulla Nasarrudin in our government textbook English reader. Hello and a very good morning to all my dear students. Hope you all are fine and safe. Today in English reader class, we are going to learn a new lesson from our government textbook. So all of you will open your government textbooks. On page number 64, unit 9, write today's date 04/02/2021 and classwork. Unit 9, the name of the lesson is Mulla Nasarrudin. There are many short stories related to Mulla Nasarrudin. Very nice ones also, with lot of moral of the stories also. So dear children, today also we are going to learn one such story in which there is a small moral also. So first we will take a look at the activity 1. Activity 1. I am a 7-letter vegetable. My first 3 letters are a vehicle. The next 3 letters are a type of luggage. And my last 3 letters change every year. Who am I? Now here you have to find the name of a vegetable. It is a 7-lettered vegetable. And what is written? My first 3 letters are vehicle. मतलब कौन सा ऐसा है कि उसके first 3 letter एक vehicle होते हैं और next 3 letters are a type of luggage. मतलब एक किस्म का जो है बैग सामान है जो आप कैरी करते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं. That is your luggage. So it is a type of luggage. And my last 3 letters change every year. और मेरे जो लास्ट 3 letters है वो हमेशा हर साल चेंज होते रहते हैं. Now 7 letters have been divided into 3, 3, 3 that way, and each 3 letters have their own meanings. So first 3 letters, my vehicle, it is a cab. Then the next 3 letters are a type of luggage. After a cab, CAB cab, luggage means अगर यहाँ पर ये हटा दें तो क्या आ जाएगा? BAG baggage आ जाएगा. क्या आ जाएगा? BBAGE baggage, which is a type of luggage. और last 3 words क्या है? Which change every year. मतलब कि AGE age. So age changes every year. So your vegetable is CABBAGE cabbage. You can see there are lovely vegetables given here. This is ladyfinger, this is gourd, bottle gourd, tomato, cabbage, brinjal and carrot. From all these vegetables, the correct answer is cabbage. CABBAGE 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 letters. So next puzzle again is, what 11-letter word does everyone pronounce incorrectly? What 11-letter word does everyone pronounce incorrectly? ऐसा कौन सा 11-letter word है जो सभी लोग incorrect या गलत pronounce करते हैं? The word incorrect itself, everybody pronounces incorrectly as incorrectly only, क्योंकि incorrect is the word और उसको हम ऐसे ही pronounce करेंगे मतलब कि वो गलत तरीके से. तो that itself, this incorrectly itself is the answer. INCORRECTLY 2, 4, 6, 8, 10 and 11-letter word. Now third one, everyone has me but nobody can lose me. It always follows me in light but it disappears in darkness. Who am I? मतलब ये सबके साथ होती है, हमेशा ही होती है जब लाइट होती है तब, और जब लाइट नहीं होती है तब डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती है. तो कौन है ये? ये हमारी शैडो है जो हमेशा हमको फॉलो करती है लाइट के अंदर, और जब लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, तब ये शैडो गायब हो जाती है. एज यू ऑल नो दैट शैडोज आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द लाइट ओनली. SHADOW शैडो.
Now we move on to page number 65. This is your activity 2 from where the story of Mulla Nasarrudin starts. It is a very lovely story. Everybody will read the story also and then try to understand it also. Activity 2. Here are hilarious मुल्ला नसरुद्दीन stories. हमेशा जो मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरीज होती हैं वो हमेशा hilarious मीन्स हंसाने वाली होती है, लेकिन उन स्टोरीज में से हमेशा हमको कुछ ना कुछ मॉरल या सीखने को ज़रूर मिलता है. तो आज हम देखते हैं कि स्टोरी में से हमको क्या सीखने को मिलता है. What is the moral of the story? Once Mulla Nasrudin was lying on his bed with his eyes closed when his brother-in-law approached him. "Are you asleep?" the brother-in-law asked Mulla Nasrudin. Replied, "Why, what is it?" The brother-in-law said, "I wanted a loan of 300 rupees. I was wondering if you could lend me the money." Nasrudin replied, "Oh, in that case, let us return to your first question, are you asleep?" And the answer to that is yes, I am asleep. So go away and do not bother me. Now here the story starts with dialogue or a conversation between Mulla Nasrudin and his brother-in-law. Mulla Nasrudin was just lying on his bed and he had just closed his eyes to relax when his brother-in-law approached him, means came to him, and he asked Mulla Nasrudin, "Are you sleeping?" The brother-in-law asked and Mulla Nasrudin replied, "Why was it what it is?" मतलब उसके जब ब्रदर इन लॉ ने ऐसे पूछा कि आप सो रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन से, तो उसने कहा हाँ, लेकिन क्या बात है. तो ब्रदर इन लॉ ने ऐसे बोला कि आई वॉन्ट 300 रुपीज़, मेरे को 300 रुपीज़ चाहिए, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? थोड़े दिनों के लिए आप मुझे ये उधार दे दीजिए. तो मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत ही जवाब दिया. ही वॉज वेरी वाइज पर्सन, सो ही said, "So let us first let me answer the first question, that are you sleeping?" तो उसने सबसे पहले कहाँ से शुरू किया? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ब्रदर इन लॉ आस्क्ड, क्या आप सो रहे हैं, वहाँ से चालू किया उसने, और उसने कहा हाँ मैं अभी सो रहा हूँ. मुल्ला नसरुद्दीन ने उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि येस आई एम स्लीपिंग, सो यू गो अवे फ्रॉम हियर एंड डोंट बॉदर मी. उसने डायरेक्टली मना नहीं किया कि मैं 300 रुपया आपको लेंड नहीं करूँगा, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही सेड दैट बिकॉज आई शुड फर्स्ट आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट आर यू अस्लीप, और उसका आंसर मैंने दे दिया कि हाँ मैं सो रहा हूं, इसलिए आप इस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करें. If you were Mulla Nasrudin, what answers would you give to the brother-in-law? Share the answer with your classmates. अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन की जगह पर होते तो आप उनके ब्रदर इन लॉ ने जैसे क्वेश्चन किया तो आप उसको क्या जवाब देते? एंड यू हैव टू राइट द आंसर. If I were Mulla Nasrudin, I pretend to be deaf. I would tell him that I cannot hear anything. अगर मुल्ला नसरुद्दीन जी की जगह अगर मैं होता तो मैं क्या करता कि आई प्रिटेंड, मतलब मैं ऐसा नाटक करता कि आई एम डेफ, दैट मीन्स आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. नाउ नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 3. रीड द स्टोरी साइलेंटली. अब जो है स्टोरी स्टार्ट होती है. दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द मुल्ला नसरुद्दीन. Now we'll start the story. One day, Mulla Nasrudin was talking to his neighbor. The neighbor looked very miserable. अब एक दिन की बात है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक नेबर से, एक अपने पड़ोसी से वो बात कर रहे थे, और वो पड़ोसी बहुत ही ऐसे दुखी जैसे दिख रहे थे. Nasrudin asked him what was bothering him. The man started to complain about the lack of space in his house and said, now Mulla Nasrudin asked that fellow, that his neighbor, that what is the matter, why you are looking so miserable, why you are so sad. Then that man said that he was complaining about lack of space in his house. मतलब उसके पड़ोसी ने क्या बोला कि मेरे घर में जो है जगह की बहुत कमी है. lack of space means जगह की घर में बहुत कमी है, इसलिए अब मैं क्या करूं. And he said, it is such a small house. Mullah, my wife and my 3 children and my mother-in-law and I all live together in the same little house. अब उसने मुल्ला नसरुद्दीन को क्या बोला,
इट इज़ सच अ स्मॉल हाउस मुल्ला, मतलब उसने क्या बोला, उसके नेबर ने मुल्ला नसरुद्दीन को कि मेरा घर बहुत ही छोटा है, उसमें मेरी वाइफ, मैं, मेरे 3 बच्चे और मेरी मदर इन लॉ, हम सब एक साथ एक ही घर में, उस छोटे से घर में रहते हैं। Moving on to page number 66. It is very cramped and there is hardly any space to move around. He asked Nasruddin for some advice on how to deal with this problem. अब उसने क्या बोला, उसके पड़ोसी ने मुल्ला नसरुद्दीन के कि बहुत ही छोटी जगह है कि हम मुश्किल से जो है इस घर के अंदर जो है मूव कर सकते हैं, तो यू जस्ट गिव मी सम एडवाइस दैट हाउ आई शुड डील विद दिस प्रॉब्लम और गिव मी सम सॉल्यूशन टू दिस, to my problem, how to deal with the lack of space. Nasruddin said, do you keep chickens in the yard? Yes, 10 of them, replied the man. Good, bring them inside the house and keep them there. अब उसने तुरंत ही अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या आप चिकन्स अपने यार्ड में, मतलब कि अपने आंगन में चिकन्स रखते हैं, तो उसने कहा हाँ, कितने हैं, 10 of them are there. तो मुल्ला नसरुद्दीन सेड दैट ब्रिंग देम इनसाइड द हाउस, आप उसको अपने घर के अंदर लाकर रखिए. सेड नसरुद्दीन, बट मुल्ला, द मैन एक्सक्लेम, माई हाउस इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जस्ट डू एज आई से, नसरुद्दीन रिप्लाइड. अब उसने ऐसे बोला कि मेरा घर तो ऑलरेडी बहुत ही छोटा सा है, हम ही लोग इतने बड़ी मुश्किल से रहते हैं, उसमें ये 10 चिकन्स को हम कैसे रखेंगे. लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन सेड दैट डू एज आई से, मतलब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग आप वैसा करो. द मैन वॉज रियली वेरी ट्रबल्ड एंड वॉन्टेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन. ही हैड to his problem. He decided to give Mulla's advice a try. So the man went home and brought all the chickens into the house. The man was very troubled, मतलब वो इतना परेशान था अपने इस प्रॉब्लम से, जगह कम होने की वजह से, तो उसने सोचा कि चलो what Mulla Nasruddin has advised, let me try to follow his advice and see what happens, because he wanted a solution to his problem, he wanted to get out of this problem, so he thought why not to try what he has told. So he took all the chickens into his house. Next day he went to meet Nasruddin again. He said, Mullah, I followed your advice and took the chickens into the house, but it did not solve anything. In fact, it made matters worse. My house is even more cramped now. Now, next day, he again went to Mulla Nasruddin and said that I followed your advice, and as per your advice, I took all the chickens into the house, but nothing has happened. The problem has even worsened because now the space is even little than what it was. So nothing has changed, only my matters have gone worse. My problem has increased and nothing positive has been done. I see, said Nasruddin. Now take your donkey and keep it inside your house. The man did not think much of this idea, but Nasruddin managed to convince him to do. अब उसके बाद क्या हुआ, उस नसरुद्दीन ने क्या कहा कि अगर आपके पास डोंकी है तो उसको भी आप अपने घर के अंदर ले जाइए और रखिए. इस चीज़ के लिए दैट नेबर वॉज नॉट अग्रीइंग, बट समहाउ मुल्ला नसरुद्दीन कन्विंस्ड दैट मैन टू डू दैट. नाउ हियर, do you think that Mulla Nasruddin is giving an appropriate advice? What other ideas, according to you, can he suggest? Discuss with your classmates. I think he is doing the right just to show that how the space can be, how you can feel the space, that you have to see and you have to feel the space. So he is doing the right thing. The next day, the man came to Nasruddin looking very distressed and said, now it is 6 humans, 10 chickens and a donkey inside my house. It is so crowded that no one can hardly move. Nasruddin replied, now you owe a goat too, don't you? Yes, I do, said the man. Great, Nasruddin said, take it inside the house too. Now the third day again that man went to meet Nasruddin, and he was very, very puzzled that what is going on. Means the way he is telling that you take this inside, first I put chickens inside, then I put donkey inside my house, but the thing has now his house has become so small that nobody can even move also inside the house. Then Nasruddin now replied, Nasruddin asked that man that you have a goat too. Now you also take that goat inside and put it inside your house only. अब जो आपके पास बकरी है उसको भी आप अपने घर के अंदर ले जाइए.
The man objected how that is going to solve anything. But Nasruddin once again convinced him to do so as he had said. So अब उसको आदमी को और भी आश्चर्य हुआ उसके नेबर को कि अभी इतना सब अंदर है, अब मैं गोट को भी अंदर ले जाऊँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि इससे क्या होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, यू डू समथिंग एल्स। लेकिन नसरुद्दीन अगेन कन्विंस दैट मैन टू टेक दैट गोट इनसाइड द हाउस। नसरुद्दीन ने फिर उसको कन्विंस कर लिया कि वो जो है गोट को अपने घर के अंदर रखे। The next day, the man walked up to Nasruddin in a state of anger and distress and said, "Your plan has made our lives miserable. The house is now too crowded that we are finding a difficult even at it difficult to even breathe. My family is upset and everyone is complaining about lack of space." Now, the very next day, after keeping the goat inside the house, the very next day that man again walked up to move to Nasruddin and he met and he was in great anger and distress. मतलब वो बहुत ही गुस्से में था और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। उस लाइफ वॉज मिजरेबल, मीन्स ही वॉज वेरी अनहैप्पी एंड अनकम्फर्टेबल। उसको इतना हो गया था, उसने कहा मेरे घर के अंदर अब कितने लोग थे, 6 humans were there, 10 chickens were there, a donkey was there and a goat was also there inside the house now. So there were so many people that now they cannot find the space to breathe also. मतलब इतना ज़्यादा उनका घर पैक हो गया था कि उसको ब्रीदिंग अब ऐसा लग रहा था कि वो सांस भी नहीं ले सकता है।